चुप चुप कोई वीडियो देख रहा है, क्या मतलब लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का बोलना पड़ेगा? ओके गाइस, वॉच द वीडियो, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, press the bell icon and thank you. Hello guys and welcome to the episode 29th of the Artistic Show or podcast, depends on where you're listening to me. And I have a question for you. Do you know how many dreams are left? Do you know how many goals are left unaccomplished? Do you know how many legacies are never made just because people think that they'll start one day when they'll be perfect? That's what people say. लोग कहते हैं कि मैं उस दिन जिम जाऊंगा जिस दिन मेरी एक हेल्थी बॉडी हो जाएगी, राइट? जिस दिन मैं परफेक्ट हो जाऊंगा उस दिन मैं जिम ज्वाइन करूंगा और उसके बाद मैंने ऐसी की तैसी फेंक देनी है। लोग कहते हैं कि मैं उस दिन वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू करूंगा जिस दिन मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, जिस दिन आई विल हैव अ ब्यूटीफुल फेस एंड देन आई विल हैव द परफेक्ट माइक एंड देन आई विल हैव द परफेक्ट इक्विपमेंट एंड द बैकग्राउंड। एंड ऑब्वियसली लोग ये नहीं कहते कि मेरे बैकग्राउंड में मेरा बेड होगा, उसके ऊपर मैं कुछ बुक्स रखूँगा। और definitely people don't say this and people don't start like this. Definitely लोग ये नहीं कहते कि what's that on your face and still you are recording. Definitely people don't say you sit on the floor, I'll sit on the floor and record like me. By the way, you know, log they just don't start on their dreams because they are afraid of other people's judgment. कि उसने देख लिया तो वो क्या कहेगा, उसने देख लिया तो उसको क्या लगेगा. People do not start just because of this. All of us in this world, we are trying to be perfect. We are trying कि हम किसी तरह जो है ना, किसी तरह हम perfect हो जाए. Instagram या Facebook या social media on the whole, काफ़ी सारे लोग social media, they are a completely different species. That is the joke I make. कि लोगों की social media, there are some people, their social media is a completely different species. Social media was not made, that was not the purpose कि हम वहाँ पे अपनी perfection show करें, जो कि रियल में exist ही नहीं करती, सिर्फ उन posts पे exist करती है. That was not the purpose of social media. The purpose was that we can just share our lives and have a good time. But you see, people, just because they wanted to be, हर किसी से एक level up होना चाहते थे. Significance behavior, that's what I call this, significance behavior. There are two ways to build the tallest building in the town. एक तरीका ये है कि दैट आप हर किसी की बिल्डिंग तोड़ दें, तब आपकी जितनी भी बिल्डिंग, जैसी मर्जी बिल्डिंग हो, पावे बिल्डिंग हो ही ना, सबसे बड़ी होगी, क्योंकि हर किसी की आपने तोड़ दी. दूसरी तरीका ये है कि आप अपनी बिल्डिंग बना लें, सिंपल. बट डू यू नो कि 99% ऑफ द लोग, 99% ऑफ द पीपल, बाय द वे मैं उर्दू और इंग्लिश को जो मिक्स करता हूँ ना, दिस इज़ अ स्किल, गेट दिस. By the way, 99% of the people, they adapt the first way. They go out and they try to just destroy everybody else's building. And that's why Instagram, they want to make them feel significant. So they just try to be perfect, which does not exist in their life. And you know what? कोई दूसरा तीसरा बंदा जिसके पास लाइफ में इतने, let's say, resources नहीं है, इतना, maybe he thinks that he's not pretty. It's only because उसने किसी की फोटो देखी है which was made and edited and furnished, और पूरी उसको furnish करके किसी ने upload किया उसे, और किसी ने उसे देखा और कहा कि मैं इतना प्यारा क्यों नहीं. That, and he or she got depressed. So the problem is not with the social media, the problem is with us, how we perceive it. You know how many times I have said to myself कि मैं कल record करूँगा, कल शायद मैं अच्छा बोल लूँ. Tomorrow never comes. The road of someday leads to a town of nowhere. It does not exist. Someday never comes. Get rid of the theory of someday. So my lesson to you for today, it's simple. Why don't you just start? Why are you trying to be perfect? The only upward spiral in life, it comes from starting and trying and failing. That's the only way. Yes, you can learn and minimize the failures. I'm not saying कि आप बस जाएं और कहें कि आप बस जिम जाएं और कहें you know nothing, like literally you know nothing and you say I'll do this and then I'll do this, एक ये एक्सरसाइज कर लूँगा, एक ये कर लूँगा, और आप अपनी पूरी बॉडी को थका लें और आप अपने, और plus you make no progress at all. I'm not saying that. I'm saying learn as much as you can. But there are two ways. एक तो ये है कि आपने स्विमिंग के बारे में किसी से सुन लिया कि हाँ भाई स्विमिंग है, ठीक है, ऐसे करते हैं, स्विमिंग के बारे में पढ़ लिया,
एक दूसरा वे है दैट यू आर इन द वाटर एंड यू आर लर्निंग बाय फेलिंग. एंड व्हाट्स द बेस्ट वे? हाउ डिड यू लर्न साइकिलिंग? अगर आपको साइकिलिंग आती है, और ड्राइविंग, हाउ डिड यू लर्न? आपने किसी से सुना, आपका दोस्त आपको एक दिन बैठ के आपको कहा कि ये बोर्ड है, ठीक है, मैं यहाँ पे बैठ के आज तो मैं लेक्चर देने लगूँ कि ड्राइव कैसे करती है, और उसने ड्राइविंग के आपको 12 असूल्स बताए, 12 असूल बताए. असूल्स पता नहीं यार, व्हाट इज़ रॉन्ग विद माई उर्दिश. खैर, उसने आपको ड्राइविंग के 12 असूल बताए और आपने कहा मैन दैट्स इट, और उसके बाद आप गाड़ी में बैठे, यू आर अ परफेक्ट ड्राइवर. दैट्स नॉट हाउ लाइफ हैपन्स. लाइफ हैपन्स कि आप गाड़ी में बैठे, फर्स्ट टाइम आपको पता भी नहीं था कि इसका क्लच किधर है, इसकी ब्रेक किधर है, इसका एक्सेलरेटर किधर है, इसका स्टीयरिंग किस काम का है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मैंने अगर वाइपर चलाना हो तो वो कैसे चलेगा, गियर कैसे लगाना है. यू नो नथिंग. इट्स लाइक अ मिलियन डिफरेंट थिंग्स फॉर यू. ये जो साइड पे शीशे लगे इनका क्या काम है, ये रियर व्यू मिरर का क्या काम है, व्हाट इज ऑल दीज थिंग्स? आई डोंट नो नथिंग. And the first time you say, and the car is driving and you don't know where it's going and you're trying to share it, और आपके साथ बैठा हुआ आपको दोस्त बता रहा है या whoever your teacher is आपको बता रहा है कि don't do this and he's shouting at you like literally don't. But still, that's the way you learn, by getting into the driver's seat. You don't learn that, you don't become perfect. पहले दिन आप बैठे और आपने कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दे दी. तो हम सब, by the way, do you know हम में ये परफेक्शन का मसला क्यों है, कि हम क्यों कहते हैं कि हम परफेक्ट हो? There are two deepest fears in humans. The first is that I am not enough. And then if I am not enough, I won't be loved. That's the fear that we have, the deepest fear that we have. तो हम यही कहते हैं कि if I make a mistake, then I am not enough, then I won't be loved by the people in my society, in my family, from my friends. That's what stops us. That's fear. F-E-A-R. False evidence appearing real. That fear stops us. So we have to get rid of that. We have to see that, listen, either I can let that fear control my life in the short term. मैं उसे कहता हूँ कि ठीक है, आई एम नॉट शॉपिंग, आई एम जस्ट कीपिंग दीज फ्रेंड्स, दीज पीपल, आई एम कीपिंग देम इन माई लाइफ, पर आई एम नॉट स्टार्टिंग. या तो आप ये कह दें कि मैं अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, अपने जो भी है, whatever vision you have, you say to yourself that I am not letting that vision go to waste. And even though there is fear, even though this is fearful, even though this is new, even though I am going to fail 100 times, but that 101th time I will rise up. It will take me some time, obviously, but I'll rise up. Short term it might be painful, but in the long term it will be a million times more rewarding. So it's your decision. Either let that fear ruin your life, or either face it and still either face it and fail and learn and grow, and then make the life the way you want it. Make your life the way you want it. एक दफ़ा मैंने एक कोट सुना and it really stuck with me. Like एक चीज़ होती है ना जो आपको वाकई आपको याद रह जाती है और it really moves you, and that's what that's the story, that's the thing which I'm going to tell you. और वो बात आपके साथ भी I think it will resonate with you so much. और वो ये है कि that living the hard way is easy. Living the easy way is hard. And I'm going to repeat that. Living the hard way is easy. Living the easy way is hard. So it's your decision. Either you choose to live in the easy way in the short term, or you decide to live the hard way and you have much more rewarding time. You're going to turn 80 once. Do you know that? Your life is going to pass and you only get one chance. I mean, it's not like 80 पे आप कहेंगे maybe I had one thing. And do this rocking chair test with you. Think about it कि अगर आप आज start नहीं करते and you don't become a master eventually, and you let that fear stop you, and then I'm not saying get start or do this. I'm not a motivational speaker. I'm just here to give you choices. So आप 80 years की एज में अपनी rocking chair पे बैठे हैं and you're reflecting back on your life, and what do you say to yourself? I had an okay life, I had a poor life. Maybe what if you say to yourself 80 years की एज में, और maybe 100, अल्लाह करे आप 100 तक जिंदा रहें, पर आप 100 years की एज में एक डेकेड के बाद, एक सेंचुरी के बाद, सॉरी नॉट इट्स अ सेंचुरी, आप एक सेंचुरी के बाद खुद को कहें कि
maybe I could have done better. Like, look at that. You are at 100 years of age and you're saying yourself, maybe I could have done better. Think about it. Think about what you want. And please, if there is any form of fear stopping you, do not let it. Because the moment you start thinking about what will other people say, what will these people say who have expectations from me, that's the moment you kill yourself. You might be buried at 80 years, but that's the moment you kill yourself. और एक और, this is the last quote that I'm going to share with you, and it really stuck with me as well. And I don't know, it's from Charles Bukowski, or I don't really remember who said this, but it is that, you see, most people, they die at 25, but they are not buried until 75. So please do not kill yourself waiting, hoping that someday you'll be perfect in somebody else's eyes. Do not do that. That's a squat. That's nada. That's no. You get zero results from that. Start, fail, learn, grow. That's the way. And I'll see you in the next episode.